Hey guys, welcome back to the channel. आज मेरे सामने है you can guess the one and only MG Hector. ये है MG Hector का टॉप वेरिएंट, द शार्प वेरिएंट. एंड सीधे सीधे फेस की बात करें तो these are the DRLs, LED DRLs. अभी इंडिकेटर के काम कर रहे हैं. These are the LED high beam, low beam lamps and the LED fog light. यहाँ पे देख सकते हैं तो मैसिव MG का लोगो है. ऊपर मॉरिस गैराज की ब्रांडिंग है, बीच में बड़ा सा MG का लोगो है एंड दैट इज़ द फ्रंट फेसिंग कैमरा. फ्रंट फेस की बात करें तो काफ़ी मस्कुलर है. यू कैन सी दैट देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ब्रिटिश डिज़ाइन हियर, जहाँ से इंस्पायर हुआ है. MG कंपनी की बात करें तो दिस वाज अ ब्रिटिश कंपनी एंड इट इज़ नाउ हेडेड बाय SAIC चाइना, which is the largest car manufacturer in China. The Hector is also sold as the Chevrolet Captiva in the Middle East and Americas and as the Wuling Almaz in Indonesia. साइड प्रोफाइल की बात करें, this is a dual tone variant, dual tone paint job है, candy white. व्हील्स की बात करें तो व्हील डिज़ाइन मुझे काफ़ी स्टनिंग लगती है. एंड टायर साइज़ की बात करें तो इट इज़ 215/55 R18s गुडियर्स के टायर हैं. एंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो दिस इज़ 4.7 meters in length. This is the longest in the segment after the Kia Carens. आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड पे डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स दिए हैं एंड इसी वजह से कार की डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है. देयर इज अ क्रोम स्ट्रिप दैट रन्स अलोंग द A pillar to D pillar. From some angles the car does not give that SUV stance because it's so long, but from most angles the car is amazingly beautiful. और ये वेदर में तो बहुत ही अच्छी लग रही है. पीछे की बात करें तो you can see that the dynamic swipe indicators are still there at the rear also. पीछे MG की बैजिंग है, हेक्टर की बैजिंग है एंड इंटीरियर इनसाइड की बैजिंग है. नीचे देख सकते हैं तो बम्पर को एक सिमेट्री देने की कोशिश करी है. फॉरेन मार्केट्स में एग्जॉस्ट राइट साइड पे आता है, सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि वो एक ही यूनिट है. ओवरऑल रियर एंड की बात करें तो लास्ट टाइम जितना बिजी नहीं है एंड इसलिए ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक आता है. रियर 3/4 क्वार्टर से देखें तो काफ़ी अच्छी लगती है. इट इज़ रियली नाइस. ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया है एंड the roof rails are functional. This is the camera. And boot की बात करें तो automatic boot space दिया है. Capacity है 580 liters की. This is the partial shelf जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं. ऐसा पार्शल शेल्फ मिलता है यहाँ पे. ये आप ऐसे ऊपर जाने दे सकते हैं. दिस हैज़ वेलक्रो देयर सो यू कैन अटैच इट ऑन द फ्रंट एंड. एंड यहाँ की डिज़ाइन बहुत अच्छी दी है ये पार्शल शेल्फ की कि आप इसको डिस्कनेक्ट करके पीछे जाने दे सकते हैं. देन नीचे बात करें इसके नीचे तो कवर के नीचे यू हैव योर टूल किट्स, शेल्फ हुक है, एक्सेसरीज है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस बिकॉज द स्पेयर टायर is beneath the car. Full size spare tire है but not an alloy. It is a steel one but that's all right. आगे पीछे देखें तो you have 4 parking sensors. यहाँ पे भी इंडिकेटर दिया है और यहाँ पे इंडिकेटर क्यों है क्योंकि जब आप बूट खोलते हो तो लाइट्स भी ऊपर चली जाती हैं. तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू हैव हैजर्ड लाइट्स हियर, तो दे आर देयर. फॉग लाइट्स भी यहीं पे हैं. दीज फंक्शन एज फॉग लाइट्स व्हेन यू टर्न देम ऑन एंड वरना ये इंडिकेटर का काम करती हैं. लेट्स क्लोज द बूट. ये अपना खुद का टाइम लेती है बट दैट्स ऑल राइट. काफ़ी स्मार्ट लगता है, काफ़ी आई कैचिंग लगता है. एंड जब भी किसी को सामान पीछे रखना होता है एंड मैं बटन दबा के डिक्की खोलता हूँ ऑटोमेटिकली तो सामने वाला बंदा पक्का बोलता है कि यार ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है, बहुत सही है. बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूल टोन ट्रीटमेंट दिया है. देयर इज़ नो हेक्टर बैजिंग हियर बट यहाँ शीशे पे MG की ब्रांडिंग दी है. दिस कार हैज़ अ फीचर नोन एज वॉक इन एंट्री. लेट मी जस्ट शो यू. गाड़ी यहाँ पे कर दी बंद बट एज सून एज यू वॉक क्लोज टू द कार विल ओपन अप एंड आप एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट डिटेक्ट्स द की.
ये स्पेस की बात करें तो दिस हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास लेग रूम ऑफ एनी कार. देयर इज़ मैसिव स्पेस इन द रियर सीट. आप सीट को यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं. अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज़ करनी हो तो यहाँ से होगी. एंड यू कैन सी दैट देयर आर isofix style seat mounts here. And this is the armrest of the car. यहाँ पे 2 cup holder दिए हैं. Overall leather quality is quite good. You will feel that you are in a German quality car here. And all the passengers get a head. They get a headrest. And Infinity branded speaker है. This car has 8 Infinity branded speakers जिसकी audio quality काफ़ी ज़बरदस्त है. These are the rear vents of the car. आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. एंड द थ्रो ऑफ दिस एयर कंडीशन जो जिस तेज़ी से हवा भेजती है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AC यूनिट्स इन द सेगमेंट. देयर इज़ अ सिंगल USB पोर्ट हियर, 5 वॉट 2 एम्पियर. यहाँ पे आप अपना फ़ोन या कुछ रख सकते हो. यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर है, काफ़ी वाइड है. आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं यहाँ पे. डोर की बात करें तो देयर इज़ अ डुअल टोन फिनिश इन द कार. इट इज़ ब्लैक एंड वाइट. एंड बिकॉज ऑफ द वाइट इंटीरियर आपको काफ़ी एयरी फीलिंग मिलती है गाड़ी में, इवन इफ द सनरूफ इज़ क्लोज. यहाँ पे विंडोज़ काफ़ी वाइड है एंड आप देख सकते हैं. वन ऑफ द फीचर्स दिस कार डज नॉट हैव इज़ अ विंडो ब्लाइंड, बट आप अटैच करवा सकते हैं MG में से ही. एंड लेग रूम की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है गाड़ी. नीचे फ्लैट स्पेस दी है तो इवन 3 people कैन सेट कंफर्टेबली. इफ़ यू वांट टू इन्हांस द बूट स्पेस, आप यहाँ से हम यहाँ से सीट डाउन कर सकते हैं दोनों साइड की. यहाँ से सीट डाउन कर सकते हैं दोनों साइड की. एंड यू गेट अ मैसिव रूम. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. सीट डाउन करने से बूट स्पेस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है. वैसे भी 580 लीटर्स है एंड सीट डाउन करने पे 1200 लीटर्स आप गिन लो. सीट भी 60-40 स्प्लिट होती है, सो यू कैन डेफिनेटली कैरी समथिंग दैट्स वेरी लॉन्ग और समथिंग दैट्स वेरी वाइड. देयर इज अ बॉटल होल्डर हियर जहाँ पे आप बॉटल आराम से रख सकते हैं. 1 liter बॉटल फिट्स नाइसली. This is a space to keep anything else that you want, or to grab the seat, or to grab the door. My mistake. और यहीं से आप सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं. वन ऑफ द स्टार फीचर्स इन दिस कार. देयर इज अ फ्लैट बेड ऑन द कार, सो 3 people कैन सिट आराम से एकदम. Infinity branded speakers. There is a button for the up and down function of the car, but the car does not get one touch opening or closing of the car for all passengers, just for the driver's seat. Headroom is ample, but it is hampered somewhat by the sunroof, but that's all right. Headroom is plenty. काफ़ी spacious है गाड़ी. You can see leather quality is also very good, but since it is white, then भी हो सकती है, but it can be cleaned very easily. It is a leatherette seating. Now we have covered the rear seat. Let's go to the front seat. Both sides get a request sensor for the car, but you don't need them in most cases because there is walk-in entry. Front seat की बात करें तो there's lots of space. Let me just show you the adjustments for the driver's seat. You get a 6-way adjustment on the driver's seat. This is for the recline. This is to take the seat front and back. This is to raise the seat height up and down. Passenger side की बात करें तो there is a 4-way adjustment for the seat, recline and front and back. There is no height adjustment for the passenger seat, but that's all right. Passenger seat में automatic adjustment मिलना भी बहुत बड़ी बात है. आप देख सकते हैं the car looks stunning in this weather. It looks amazing.
This is for the boot. This is for the adjustment of the instrument cluster for the driver's seat. It adjusts the backlight levels. This is the headlight leveler. This is for the adjustment of the side mirrors. This is for right, this is for left, and आप यहाँ से mirror adjust कर सकते हो. Let me adjust to right. This button is to close the mirrors. आप देख सकते हैं. Infinity branded tweeter. Down there is an Infinity branded speaker, and there's a bottle holder here. यहाँ पे आप आराम से 1 लीटर की बॉटल डाल सकते हो. मेटल ग्रैब हैंडल है यहाँ पे, लेदर ट्रीटमेंट है, and overall the car in terms of fit and finish is absolutely amazing. Hard plastic here, but soft touch material here. Hard plastic here again. This is the glove box. As you can see, it is ventilated. I mean, it is a cooled glove box. Other features are, this is the ventilation system for the passenger seat. This is the button for the ventilation system on the driver's seat. यहाँ पे एक डाउट है मुझे कि यहाँ पे बटन्स क्यों रखे हैं. मे बी अगर आप किसी को बताना नहीं हो कि आपकी गाड़ी में ventilated seats है, you don't want somebody to use that feature, you can just not tell them. So it's a hidden feature of the car, you can say. There's a USB port here, there's a wireless charger here, and this is the massive 10.4-inch infotainment system. This button is for turning off the traction control. This is the hazard light switch. This is to decrease the volume, this is to increase the volume. This is the power button for the infotainment system. This is the defogger buttons. टच स्क्रीन की बात करें तो इट इज़ काफ़ी फ्लूइड, बहुत फ्लूइड है, एंड यहाँ पे आपको गाना ऐप पे मिलता है. एंड पहले बहुत लैग करता था ये सिस्टम इन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ द हेक्टर, बट नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ क्वाइट फास्ट. You also get wired Apple CarPlay and wired Android Auto here. And let's check the audio quality of the car. Let's play a song. Audio quality is quite amazing, the clarity is amazing, the bass is subtle, it is not overpowering, and overall it's a very pleasurable audio experience. यहाँ की बात करें on the steering let's talk about the steering mounted controls. This is a button to call the MG assistant. काफी slow है, but that's all right, you barely use it. Hi, how can I help? Open sunroof. आप देख सकते हैं यहाँ से sunroof open हो गया. It is quite good. You can adjust the AC controls, you can adjust the system for the sunroof. यहाँ की बात करें, driver side gets a mirror with illumination with a light. Passenger side also gets illumination with a mirror. This is the LED lights. This is a button to close and open the sunroof. This is for the sunroof blinds. This is for illuminating the lights if the car door is open. Let's just check that system. गाड़ी का दरवाज़ा खोला and light चालू हो गई. This is the sunglass holder, and all grab handles get soft closing. There's a coat hook here. There's a coat hook on the rear also on both sides, as you can see. And एक फीचर जो मैंने बैक का मिस कर दिया, that is the LED lights on the rear seats. Both get an LED light. These are the AC vents, and the tunnel is very flat. आपको बहुत स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे. There's ample leg room, and the overall leather feel, the finish of the car is absolutely amazing. It is absolutely loving. This feels like a very expensive car. It does not feel at all like it's a car that starts at 15 lakhs and goes till 25 lakhs. This is the petrol variant of the car.
This is an electrochromatic mirror. It adjusts depending on the light. This is the wireless charger for the car. There's a USB port here. This is the gear selector for the car. This is an automatic variant, so you have park, reverse, neutral, drive. You can even turn it into manual. There's a sports. There's a sports mode in the car. There's a drive mode in the car. You can select manual gears also. There's to increase or decrease the gears. This car also has in-cabin lighting. You can select it. You can set up to 8 colors. This is there's space here to keep your things under the driver armrest. This is the electronic parking brake. This is automatic hold function for the car. This is the switch for the parking sensors. This is the button for the 360 parking camera. As you can see, quality is not the best, but it is still very usable. You have left, right, and front and back. You can just access it by touching the screen. There are vertical AC vents. Horn is actually quite good, but the main point of talking in this car is the absolutely gorgeous 10.4-inch touchscreen. Here you get weather updates. It is actually 27.8 degrees Celsius in the car. The location is Rajkot. The time is 18:36 or 6:36. You get radio, you get navigation, and this is to select the audio source for the car. Actually right now it's Ghana, where you can select whatever you want. You can access the Bluetooth settings here also. And let's talk about the settings in the car. You can connect to Wi-Fi, you have Bluetooth, you have your equalizer. Also here you can balance the audio, whether you want the car to output at all channels, or if you want to just output at the back, output at the front, or either side. All touch. You have volume controls, you have display controls, you have date and time, you have vehicle settings. Vehicle settings includes whether you want to have a roll down for the driver side, car lights for the illuminated entry and lane change, and walk me home feature. Walk me home feature is that आप गाड़ी बंद कर देते हो and आप चल लेते हो, तो the headlights will be illuminated for 30 seconds, 50 seconds, or 75 seconds. In order to find your car, you can either have flashing lights, or you can have flashing light and whistles. Whistle meaning car horn बजाएगी अपना, so you can hear it. You have user settings here. You have mood lighting. As you can see, if you select, you can either select one constant color or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colors which change, which fluctuate, and this is to set the speed of the fluctuation. You can set the skin of the you can set the theme of the entire display. You have dynamic gray, you have classic blue, and iSmart gray. This is for the USB storage. This is to factory reset the system. This is to upgrade the system, activation, user manual, and about MG. So that's about it. Let's open the hood and see what's underneath. As you can see, it says MG and turbo. There is ample shielding in the car. The engine is organized and shielded with the covers in a very neat way, which is not available in any other car. Nobody does it this way. It's very professional and certainly elevates the feel of the car. This to fill the wiper fluid. And there's a petrol engine, 1.5 liter, and it outputs 150 horsepower and 350 Nm of torque. That's about it. Now let's switch to B-roll. These are the lights of the car. Let's set into high beam so you can see what it actually looks like.